Welcome back for our second lecture in the case of UV spectroscopy. In the case of first lecture, we have discussed about what is the basic things about the principles, and the next one we have discussed about the theory. In the case of principle, as we know, just we discuss about it is an absorption spectroscopy. So the whatever the molecules consist of and different electrons, valence electrons are there, they show certain kind of an absorption. वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शोन करते हैं। जैसे एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, वाइब्रेशनल और दैट रोटेशन एनर्जी इज देयर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो क्या करते हैं वो, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, ओन एनर्जी उनकी खुद की एनर्जी रहती है, हम रेडिएशन उनके ऊपर पास करने के बाद क्या होता है, तो बिकॉज ऑफ द रेडिएशन दैट वी आर पासिंग, देन इट एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। उसके वजह से क्या होता है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, दे कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। मीन्स उनके वजह से ग्राउंड स्टेट एक्साइट स्टेट हो जाते हैं, और क्या करते हैं फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एनर्जी देते हैं। सो दैट इज ग्राउंड स्टेट में हम उसको E0 बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट को हम E1 बोलते हैं। ठीक है। सो गिव्स आउट दैट एनर्जी एंड दैट वी आर स्टडिंग, दैट इज नथिंग बट द absorption spectro or UV spectroscopy. Then we study about the whatever the uh, that theory part. In the case of theory, we just having the equation E is equal to h mu, is nothing but the energy. We know that ground state and excited energy is replaced by E1 and E0, and that mu is nothing but the frequency. So energy is nothing but the ground state means what, E0 and E1. So we neglect, means ground state में खुद की एनर्जी है, E1 में एक्साइटेड एनर्जी है, तो हम क्या करते हैं, E1 माइनस E0 मीन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम निग्लेक्ट करते हैं, तो वो जो एक्सेस एनर्जी है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, इज इक्वल टू एच म्यू। सो वट एवर द म्यू इज देयर, म्यू इज नथिंग बट द frequency that replaced by c by lambda, velocity of light in the air, that is c, and the divided by lambda is nothing but the wavelength. Okay, so we finally we get the equation E1 minus E0 is equal to h c by lambda. Okay, so that we studied, and then we are going to be study about the different type of electrons, like n sigma pi, uh, then that is antibonded, then there is unsaturated and saturated components, and there with their examples that we have studied. And then there is a different type of transitions, n pi, pi pi, n sigma, and sigma sigma type of transition, in which one is having higher energetic and one is having lesser energetic, out of which the sigma containing transitions generally works in the, they having the higher energetic, so they work in the UV vacuum regions, while in the case of UV spectroscopy, we are working in the regions of 400 to 800 nanometers. So, move toward the today's lecture. What are the objectives are there? So, in the case of first objective, to elaborate the chromophores and exochromes. What is the chromophore? What is exochromes? Then there is an various spectral shifts are there. Hypsochromic shape, bathochromic shift, hyperchromic, and hypochromic. Okay, hyper and hypochromic. So these are the four different shifts that we have to be studied. Then we have to be study about the effect of solvent on absorption of the spectra. Might be there is a certain changes in the absorption may takes place because of the various kinds of solvent we are using. Then finally we have to be study about the Beer's law, Lambert's law, its derivation, which is very vital and very important, and its deviation point. So these are the objective of today's lecture that we have to be covers. So we start with the chromophores. Okay, so chromophores means nothing but which are the compound which absorb the light of wavelength, means विजिबल लाइट ऑब्जर्व करते हैं। विजिबल का रीजन क्या है, 400 to 100 मीटर। सो 400 से लेके 800 नैनोमीटर का जो रीजन रहता है उसको हम विजिबल रीजन बोलते हैं, विच अपियर्स कलर टू द ह्यूमन आइज। उसकी वजह से हमें क्या बोलते हैं, हमें वो कलर दिखता है। ओके, सो जनरली डेफिनेशन, there is a nucleus or isolated covalently bonded unsaturated, I am referring the word unsaturated groups which exhibit the absorption, वो क्या करते हैं, exhibit करते हैं absorption of electromagnetic radiation in UV, maximum UV visible regions, that called as the UV region का भी करते हैं, UV visible, maximum UV visible region, that called as the
क्रोमोफोर्स, और जो सब्सटेंस कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमोफोर्स, जो कंपाउंड क्रोमोफोर कंटेन करते हैं, that called as the chromosome. A functional groups are there capable of having electronic transitions. एक आधे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द क्रोमोफोर्स. स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस, उसके अंदर अगर हमने स्ट्रक्चरल चेंज किया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस अगर हमने उसमें किए हैं इन द क्रोमोफोर्स, कैन बी क्वांटिफाइड, हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, एंड यूजर टू प्रिडिक्ट शिफ्ट्स, उसके ऊपर हम शिफ्ट करते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, एक आधा ग्रुप हमने ऐड किया, सपोज CS3 ऐड कर लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही है. ओके, सो there might be observed that which kind of shifts takes place, whether it's a bitochromic, hapsochromic, or hypo or hyperchromic type of shifts are there. Okay, so compound possess sigma to sigma star and n to sigma star transition shows absorption at, we know that they are always show the absorption below 200, that is 150 to 180 nanometers, that lies in the UV vacuum regions not present chromophores, where there is no presence of any kind of chromophores. क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, chromophore generally appears or absorb the light of 400 800 nanometers, but in the case of this one they works in the region which is the UV vacuum, so they doesn't present any kind of chromophores. Okay, and chromophore containing component like unsaturated one, example is the ethylene, C double bond C. Okay, then the carbon containing oxygens, double bonded O group, COH group, CN, triple bonded groups are there, that is the aldehyde, ethylene, these are the examples which generally shows the chromophores. Then there are the two types, okay, in which the group is having a pi electron undergoes the pi to pi type of transitions. A group is having a pi electrons, उसके अंदर क्या है, एक आधे pi electron undergoes what going to be, there is a pi to pi star type of transition. We take the example that is the ethylene and acetylene. Okay, in which the group is having the pi electrons undergo the pi to pi transition. Example is ethylene and acetylene. That is also called as the dependent chromophores, which are dependent one, the groups that we are added. Okay, so second one is an independent chromophores. Chromophores having both, उसमें बोथ है, इसमें तो सिर्फ हम डबल बॉन्डेड ग्रुप ही कर ले, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, लेकिन इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग ग्रुप्स आर देयर, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स, so both n and pi electron undergoes the pi to pi star and n to pi star transitions. Example is the azo groups, carbonyl, nitrile, nitro compound. These are also called as the independent chromophores. हम क्या बोलते हैं इसको, independent chromophore बोलते हैं. So these are the two types of chromophores. Then we study about the auxochromes. Auxochromes खुद absorb तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, these are the coordinatively, okay, saturated on unsaturated groups. Okay, these are might be saturated, might be might contain the sigma as well as the pi, saturated or unsaturated groups which themselves do not absorb radiation. वो खुद तो कभी absorption नहीं करते radiation का, themselves do not absorb radiation, but when present along with a chromophores, लेकिन वो क्या होते हैं, एक आधे क्रोमोफोर के साथ अगर रहते हैं विद प्रेजेंट अलोंग विद द क्रोमोफोर्स, तो क्रोमोफोर होने की वजह से क्या करेगा, वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा, सो एनहांस द अब्जॉर्प्शन, ओके, property of chromophore, so they like act like an chromophores when there is a present of any chromophore groups are there. So also known as a color enhancing group, एक आधा ग्रुप हम अगर उसमें ऐड करते हैं ना तो उसका वेवलेंथ बढ़ाते हो, that is called as the color enhancing group. All auxochromes have one or more non-bonding pairs of electrons, okay, like nitrogen, hydrogen, okay, so SON, sulfur, oxygen, nitrogen, these are the kind of examples are there having non-bonding pair of electrons. So nitrogen is example, NH2 is the example, OH containing oxygen is there, OR is there, COH is another oxygen is there, so it is an hydrogen also there. So it extend the conjugation of chromophores by sharing non-bonded electrons. वो क्या करते हैं, conjugation को extend करते हैं chromophores by sharing the non-bonded electron. We taking the example of benzene. अब benzene simple है, उसमें कोई group add नहीं किया है, it is having 250Y. लेकिन जैसे हम एक आधा OH group add करते हैं, then it absorb the radiation more, means
270 nanometers, and we take added the another NH2 groups, so it converted into the 280 nanometers. Like this one about the oxychromes. Now we have to study about the spectral shifts. The spectral shifts in which there are the various types are there, in which maximum wavelength, lesser wavelength, uh, more intensity, lesser intensity, on the basis of which we can classify it into four types. First one is the bathochromic shift. Bathochromic shift is also called as the red shift. Okay, so when the absorption maxima, we can say lambda max, we can say A max also, of a compound shift to longer wavelength, उसको हम क्या करते हैं, shift क्या करते हैं, longer wavelength absorption maximum shift toward the longer wavelength is known as the bathochromic shift or red shift. Okay, so in the case of this one, uh, okay, so in the case of this one, the effect is due to the whatever the red shift is there, bathroom shift is there, also called the red shift, where maximum shift toward the maximum. The effect is due to the presence of oxochromes or by change of solvents. Okay, the effect is due to the presence of oxochromes or by change of solvents. So if there is a oxochrome present, shift maximum करते हैं, absorption more करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, this causes the bathochromic shift. Okay, so the n-pi transition for carbonyl compound experience the bathochromic shift when the polarity of the solvent decrease. अगर हम उसकी polarity decrease कर लेते हैं, ठीक है, polarity decrease करने के बाद, that is a choice of solvent that we have to discuss in the next lecture. Just now remember that one, n-pi transition of carbonyl compound experiences the bathochromic shift, वो हायर वैलेंस की तरफ चले जाते हैं व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज, हम उसकी पोलैरिटी अगर हम उसमें क्या करते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं, तब दैट इज द bathochromic shift. Then there is an hypsochromic less wavelength, also called as the color it shows, it is an blue shift when absorption maximum. Okay, here in this slide if you say, here we have to use this A, यहाँ पे A max चाहिए था, हमने उसमें lambda max, just correction is there, so you just remember that it is an A max, that is the absorption maximum is there that we are using in the case of this one. So uh, that we are using, so when A max of a component shifted to shorter wavelength, whatever the wavelength is there, in the case of bathochromic shift it moves toward the high wavelength, but it is case of this one, it is a move toward the shorter, so it's known as a hypsochromic shift, or as the color is showing is the blue color or blue shift. The effect is due to the presence of a group causes the removal of conjugation or by change of solvent. हम क्या कर रहे हैं, उसके अगर conjugation हमने remove कर लिया, if there is a lone pair of electrons the conjugation takes place, causes removal of conjugation or by change of solvent. We added the HCl solution, then hydrogen is combined with this one, converted into the aluminium ions. ओके, सो जैसे हम इनिशियली इसका 280 नैनोमीटर था, हमने क्या किया है, द एनालिसिस इज एडेड टू द एसिडिक मीडियम सिंस इज लॉसेस द कॉन्जुगेशन, क्या करता है, कॉन्जुगेशन लूज करता है, एंड कन्वर्ट टू द एल्युमिनियम आयन, और उसका वेवलेंथ जो है, दैट एब्जॉर्प्शन इज शोन एट द 203 nanometers. So this is the example of hypsochromic shift. Now we study of the bathochromic shift, we study of the hypsochromic shift. Now hyperchromic, hyper is more, in which when absorption intensity of a compound is decreased, absorption intensity क्या होती है of a compound is increased, and it's known as hyperchromic shift. So उसकी intensity जो रहती है, suppose in the case of this there is an diagram is there, so if we consider in the case of this one, okay, so suppose this one is a diagram in which if intensity is moved toward this one, intensity क्या होती है, बढ़ने लगती है. Okay, here what we say, it is an bathochromic shift. Okay, so यहाँ पे bathochromic shift है, यहाँ पे क्या है, hypsochromic shift. Okay, hypsochromic shift हम बोलते हैं. But in the case of this one, the absorption intensity, ये जो intensity है I, that is moved towards these directions. Compound is increased and is known as the hyperchromic shift. Okay, so the introduction of oxochromes, अगर हम एक आधा ग्रुप है, taking this example CH3 group, so हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप हम उसमें
ऐड कर रहे हैं, तो क्या उसके वजह से क्या हो रहा है, जब हम उसके अंदर ऐड करने लगते हैं तो एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ने लगता है। प्रीडिन के अंदर हमने CH ग्रुप ऐड किया, सो 2 मिथाइल प्रीडिन इज द देयर, एंड 257 nanometer is lambda max, 260 is over here, and the absorption max is that is the 3560. So on the basis of this one we can get the calculated one. Okay, so now uh, in the next slide we study about the hypochromic. Hypo means less. So in the case of this one, if we added this group or the uh, so in the case of this one, in the case of this hypochromic shift, absorption intensity of compound is decreaser. हम क्या बोल रहे हैं, उसकी absorption intensity जो है वो क्या कर रहे हैं हम, absorption intensity of a compound is decreased, is known as a hypochromic shift. इंट्रोडक्शन ऑफ, अब इसमें क्या होता है कि डिस्टॉर्ट हो जाती है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज गेट डिस्टॉर्ट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल कॉजेज द हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. अब एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसके पहले हमने एनिलीन लिया था तो उसमें क्या हो रहा था कि मैक्सिम हो रहा था, लेकिन इन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस naphthalene and we added the methylene group into this one. So इसका जो A max था, A max कितना था उसका, that is the 19000, but now when we added the in the case of this hypochromic shift it reduced to 10250. So उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है. सो हाइपरक्रोमिक में इंटेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है. ओके, सो दिस वन इज बाथोक्रोमिक शिफ्ट, दिस इज एन hypsochromic shift. This one is the increase in intensity is case in the case of hyperchromic, and hypochromic reduce. So in the next we just study about that one. Okay, so in the next slide we study about the shifts. Okay, so these are the effects as we already been discussed about that one, that it is having so in the case of this one if you are able to see that is the uh, hyperchromic, this one is then hypochromic, this one is then red shift, that is the maximum, this one is the blue shift minimum. So this explain all of the things about the various what we can say shift and effects. Okay, so now move toward the next slide, that is the important one is the, what is the kind of solvent that we are using. So the kind of solvent that we are using must be, solvent must be pure. ओके, एक तो सबसे पहले प्योर होने चाहिए, चीपर होने चाहिए. उसने क्यूएट के साथ, अब क्यूएट इज नथिंग बट अ सैंपल हैंडलिंग सिस्टम, वी स्टडी दैट इन द इंस्ट्रूमेंटल केस, but just now we are having that particular cuvette. So how it cuvette look like, if we say the structure of that one, so if you want to be study the cuvette is look like this one. Okay, cuvette हमें ऐसे दिखती है, और हम क्या करते हैं इसके अंदर द वी एडेड द डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सॉल्वेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं. ओके, ब्लू कलर इज नथिंग बट द सॉल्वेंट का कलर हमने ऐड किया है. सॉल्वेंट हमने जो ऐड किया है, सॉल्वेंट इन विच सोल्यूट डिसॉल्व, इसके अंदर अगर हमने, अब सपोज कंपोनेंट है हमारे पास, वी एडेड द सम सोल्यूट्स आर देयर, तो सोल्यूट्स क्या होने चाहिए, दैट सोल्यूट इन विच सोल्यूट डिसॉल्व इन कम्प्लीटली, ये सोल्यूट्स क्या होने चाहिए, हमें दिखने चाहिए, कंप्लीटली डिसॉल्व होने चाहिए, और वो क्यूवेट को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. Solvent is the important, that is the important factor in case of UV as well as visible spectroscopy. तो आइडियली हमें सॉल्वेंट चाहिए कैसे, तो हमें सॉल्वेंट चाहिए कि, तो इट शुड बी क्लियर, हमें क्या करना चाहिए, ये इट शुड बी चीपर प्योर, एक तो चीपर होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, इजीली अवेलेबल. अब वाटर इज कॉमनली काइंड ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इजीली अवेलेबल, नॉन कॉन्जुगेटेड वन. अब जो लोन पे NH2 डबल बॉन्ड उसके ऊपर डोट होते हैं, दैट मस्ट बी नॉन कॉन्जुगेटेड, हमें नॉन कॉन्जुगेटेड चाहिए. एंड सॉल्वेंट की वजह से हमें स्मूथ करो मिले, इजीली हम क्या करें स्मूथ करो हमें. इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड लेस पोलर, ये क्या होने चाहिए, शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड लेस पोलर. ओके, सो that in the case of this one. Okay, so uh,
In the case of this one, it should be transparent. Transparent means it must be clear. So इसके वजह से क्या होगा कि क्लियर होने की वजह से खुद एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, रेडिएशन इजीली पास कर सकेगा. देन मस्ट बी लेस पोलर. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Most of the time, in the case of UV spectroscopy, the solvent that we are using, less polar we are using. Okay, so जितना वो polar nature उसका less होगा, so उतना ही कम उसका interaction होने लगेगा, interaction with the solutes. Should not possess any kind of absorption when exposure to radiation. हम जब भी solvent को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम रेडिएशन सोर्स अप्लाई करेंगे, वो खुद एब्जॉर्प्शन नहीं शोन करेगा. ओके, खुद का एब्जॉर्प्शन इसमें शोन नहीं होना चाहिए. ठीक है. So then whatever the solvent effect is there, so most suitable solvent which does not absorb the radiation is the commonly used as shown in this one: ethanol, hexane, methanol, water, benzene, chloroform. These are the lambda max absorption is 210, 210, 210, 205, 280 and 245. So most commonly used solvent is the ethanol, 95% ethanol. It is cheap, सस्ता है थोड़ा सा, and it transparent down to 2100 nanometers. Commercial ethanol is not used because having the benzene. Sometimes benzene, because of which absorbs strongly in UV regions. Then position as well as the intensity. Intensity we studied in the case of hyper and hypo. The position as well as intensity of absorption is maximum gets shifted. Maximum कब shift होगा for particular chromophores by change the polarity of solvent. अगर हमने उसमें की polarity हमने change कर ली तो क्या होने लगेगा, वो hyperchromic हो जाएगा. Position as well as intensity of absorption maximum होने लगेगा. The lambda max for a non-polar component is usually shifted by change in the polarity of. वही same है, nearly about हम क्या कर रहे हैं, lambda max अगर हमें हमको shift करना है, non-polar component is usually shifted by changing in polarity of solvent. Alpha beta unsaturated carbonyl compound shows two different shifts. वो क्या करते हैं, अगर उसमें अंदर अल्फा भी है और बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो हमें दो डिफरेंट शिफ्ट्स मिलेगी. ठीक है. सो एन पाई स्टार टाइप ऑफ ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू स्टार्टर वेवलेंथ. इस केस में क्या होता है, ये पहली केस है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एन और पाई टाइप ऑफ ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with solute or the whatever the solvent molecule occurs to lesser extent with the carbonyl groups in the excited state. So example is the acetone. Okay, so C double bond was there. So acetone is 275 nanometer in hexane, while with the water के साथ क्या है, that it is nothing but the 264 nanometers. Okay, so this is the examples of this one. Pi type of transition, second type, absorption band moves the longer wavelength, as we already discussed about that one in bathychromic shift. So in the case of this one, pi transition, absorption moves toward the longer wavelength. Sigma sigma, shorter wavelength. The dipole interaction with a solvent. Okay, so dipole nothing but the positive and negative charge interaction with the solvent molecules lower the energy of excited state more than that of the ground state. हम क्या कर रहे हैं, because of the dipole interaction that we study in IR spectroscopy, dipole interaction detail. Now you just remember that one. The dipole interaction with the solvent molecules lower the energy of the excited state. उसकी जो energy वो lower करते excited state more than that of the ground state. The value of lambda max in ethanol will be greater than in hexane. उसकी जो lambda max ethanol की जो value है will be greater than the that of hexane. So pi star orbital get more stabilized by hydrogen bonding with polar solvent. Pi star orbital get more stabilized by hydrogen bonding with the polar solvent like water ethanol because greater polarity of pi star orbital. The small energy will needed for transition and absorption shows a redshift. Come energy, less energy, higher wavelength, it causes always redshift. And sigma star transition is very sensitive to hydrogen bonding. Alcohol as well as amines form bondage with the solvent molecule. This occurs because of the presence of non-bonded electrons on heteroatoms. N is nothing but non-bonded electrons present at the heteroatom. Thus transition requires the greater energy. सिग्मा कभी भी रहे यूवी रीजन में रहता है. यूवी रीजन हमने पता है वेवलेंथ बहुत लेस रहती है. वेवलेंथ लेस मीन्स एनर्जी इज मोर.
So that much about that one. Now that is about the kind of solvents and its effect. Now we are going to be discuss about the Beers and the Lambert's law. This law is very important. हम क्या बोल रहे हैं, ये लॉ बहुत ही important है. So whatever the important thing is in the case of this one, Beers and Lambert's law, as if you able to see in this diagram, अगर ये डायग्राम हम अगर देख रहे हैं तो इरेडिएशन हम पास कर रहे हैं. तो जैसे हमने इस रेडिएशन को पास किया, इफ यू एबल टू सी दिस वन इज अ क्यूवेट, ये हमारे क्यूवेट है. आई आर मीन्स दैट इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड, आई ए मीन्स व्हाट, intensity of absorb, and IT means what, intensity of get transmitted. So absorb के बगैर जा रही है और उसके अंदर हमने सोल्यूट लगे हैं. So when a monochromatic beam of, अब ये जो है ना monochromatic, I means the monochromatic beam of radiation is there, that is passes. When it pass from a, allowed to pass through a transparent cell, ये कैसी है, transparent cell है, mainly made up of a quartz, not made up of glass, which shows maximum absorption, containing a homogeneous medium. Homogeneous, homo means same, geneous medium, open absorbing substance. A portion of the incident light reflected from surface of medium. A portion of incident light reflected from a substance of medium, and portion is absorbed and remaining transmitted through the medium. क्या होता है, कुछ रेडिएशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने लगता है, कुछ एब्जॉर्ब करने लगते हैं आए, और कुछ क्या होता है, ट्रांसमिट होता है. सो वी गेट द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी. But in the most cases, the intensity of the radiation that get reflected is very low, nearly about 4%. So hence we neglect that value from the equations. So we neglect that IR, and finally we get the equation I is equal to IA plus IT. So as is shown, I is equal to IR plus I plus IT, but IR is very negligible. So we remove from that equation and we get the final equation I is equal to IA plus IT. So remember about this one. So now we are going to be Beer's law. So what is the Beer's law? When a monochromatic beam of light radiation is passes through a solution of absorbing substance, तो क्या होता है, हम उस absorbing substance, absorbing species से हम उसको पास करते हैं. Okay, transparent set containing homogeneous medium of an absorbing substance, a portion of incident light, हम क्या करते हैं, इसका एक इंसिडेंट लाइट का पोर्शन होता है, medium of an observing substance. A portion of incident light is whatever the radiation is there, intensity of observing medium, intensity of incident light that get decreases. Intensity of beam of monochromatic light decreases exponentially with increase in the concentration. Obviously is there. If you suppose we are having a particular means, अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सेल है हमारे पास, ओके okay, और उस सेल के अंदर हमने क्या किया है, द कंपोनेंट वी आर गोइंग टू बी एडेड. ओके, सो यहाँ से हमने क्या किया है, रेडिएशन, उसके ऊपर एक रेडिएशन हमने क्या किया है, इसमें रेडिएशन पास की, तो इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विथ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्विंग स्पेसिस. जितनी ज़्यादा क्या होगा, ऑब्जर्विंग स्पेसिस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट गेट डिक्रीजेस. ओके, दैट इज एक्सप्लेन बाय डी आई by DC directly proportional to I, and it is explained by negative signs. Why this negative line explains the decrease, okay, intensity, concentration, and whatever the radiation that we pass. So about this one, okay. So now in the case of next one, Lambert's law. In the case of Lambert's law, it states that a rate of decrease of intensity of monochromatic light, in the both cases there is a decrease, it takes place with the thickness of the medium directly proportional to the intensity of the incident light. So in one case which passing absorbing species पे depend है, okay, और the concentration of the absorbing species पे depend है, and second case में क्या हो रहा है, directly proportional to the thickness of the medium पे secondly depend है. So T, C is the concentration and T is the nothing but thickness. So di by dt is directly proportional to I. Negative sign remains the same. So this one is about the Beer's law and this one is about the Lambert's law by the definition. Now we have to be start with the derivations of Beer's law.
which is very important point in your syllabus. Okay, so now we are studying about the derivation of Beer's and Lambert's law. We study about the Beer's law. So Beer's law already we studied that beam of monochrome light decrease with the exponential with the increase in the concentration of observing species. Okay, so accordingly this one di by dc is directly proportional to the I. So we rearranging di by dc is equal to ki. So that is the constant ki. So rearranging that equation. Okay, so uh, in the case of that is called as a proportionality. K को हम क्या बोलते हैं? Proportionality constant हम बोलते हैं. Okay, so rearranging this equation. So हमने क्या किया है? This I is replaced by this dc. So rearranging equation di by I is equal to kdc. हम क्या बोलेंगे इसको? kdc बोलेंगे. So now we are integrating this equation. हम क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन. ओके, सो इंटीग्रेट करने के बाद डी आई बाई आई इज इक्वल टू के डी सी. सो वॉट एवर द इक्वेशंस आर देयर, डी आई बाई आई इज इक्वल टू के डी सी. सो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन वी गेट log of I minus sin log of I is equal to kc plus b. So this dd is converted, neglected, that log I is equal to kc plus b. This b is the whatever the integration constant is there, or we can say concentration of whatever the integrations. Remember one thing, this c is replaced by t. Just all things are same. All equations are same in the case of Lambert's law. First of all, as I told you, di by dc is directly proportional to I. Then di by dc is equal to ki, proportionality constant. Rearranging the equation, di by I is equal to kdc. Integrating the equation, we get log of I minus log of I is equal to kc plus b. That is equation b. So when suppose अगर आपके इसमें concentration ही जीरो है, concentration में साइनरिटी इसमें जीरो है, अगर आपने इसमें रेडिएशन पास किया, तो रेडिएशन पास करने के बाद अगर आपके पास क्या है कि सपोज देयर इज एन सेल, हमारे पास क्या है, आपके पास एक आधी सेल है. ठीक है, इस सेल के अंदर हमने क्या किया है, वी पास इज द रेडिएशन. ठीक है, रेडिएशन पास कर रहे हैं हम इसके थ्रू, लेकिन क्या इसके अंदर कुछ भी एनालिट है ही नहीं. तो क्या हो जाएगा, जितना हम रेडिएशन पास कर रहे हैं उतना क्या हो जाएगा, रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाएगा. ओके, सो जैसे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सो व्हेन कंसंट्रेशन इज जीरो, ओके, सो व्हाट गोइंग टू हैपन दैट constant zero, there is a no absorption. Hence absorption ही नहीं होगा, तो जितना रेडिएशन पास कर रहे हैं उतना ही वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट टू द IT, मींस I is equal to IT. So at zero concentration, concentration कब रहेगा लेकिन, when C is equal to zero, I is equal to IT, मीन जितना रेडिएशन हम पास कर रहे हैं उतना ही ट्रांसमिट हो जाएगा. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. I is equal to IT की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1. सो व्हेन concentration is 0, I is equal to IT. So इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट अप किया, C is nothing but 0, I is equal to nothing but IT. So log of IT is equal to K in bracket 0 plus B. So log of IT is equal to B. We get it the equation minus log of IT is equal to B. So substitute the value of B in equation 1. हमने क्या किया, ये जो B की वैल्यू है ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप किया. So B को हम रिप्लेस क्या कर रहे हैं, माइनस लॉग ऑफ IT. Okay, now we get the equation minus log of I is equal to Kc minus log of IT. So log of IT minus log of I is equal to Kc. ये माइनस को हमने इधर ले लिया, ये माइनस वैसे ही रहा, log of I is equal to Kc. This one is an equation. अगर यहाँ पे T होता तो क्या होता था, that equation is going to be, यहाँ तक तो हमारा सेम था, KDC, तो C के जगह T रहता था, and then we replace this value with the equation. Now we already know, so in the case of this one, log of IT by I. Okay, तो आप जैसे हमने substituting the value of B in equation, B की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर ली. सो माइनस log of I Kc माइनस log of IT. सो log of IT माइनस log of I इज इक्वल टू Kc. हमने ये जो प्रीवियस में log of IT माइनस log of I
is equal to kc. Okay, so we take the log to this side. Log हमने remove कर लिया, तो log of it by I is equal to kc. So converting the common log to natural log, हमने क्या किया है इसको common log. Since अब इसकी इक्वेशन को हम देख सकते हैं, हमने किया क्या है, log of a minus log of b is equal to log of a upon b. ओके, सिंपलेस्ट दिस इक्वेशन को हमने फॉलो किया है. सो log of a minus log of b is equal to log of a upon b, मीन्स log of it minus log of I. ये a है और b है, तो हमने क्या किया, log of a upon b मीन्स log of a upon b मीन्स log of it upon I is equal to kc. ठीक है, सो we are arranging it upon I is equal to kc. So convert into the natural logs, it upon I is equal to ekc. Converting to the natural log, it upon I is equal to ekc. So I upon it is equal to make inverse of both sides. दोनों को हम उल्टा कर लेंगे, तो उल्टा करने की वजह से, इनवर्स करने की वजह से क्या हो गया, it upon I के क्या हो गया, I upon it is equal to e raised to minus kc. So now we get the equation I is equal to it को हमने यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लिया, तो उसके वजह से क्या हो गया, that get converted into the this it converted into this one. Okay, so now I is equal to it upon kc is the final equation that we are getting in this one. Okay, so now move toward the next one, that is the Lambert's law. So in the case that is in the case of second one, Lambert's law, we are having the same equation, but now this is the thickness of the medium, t changes now. So di by I is equals to हम क्या कर रहे हैं, उसमें का हम चेंजेस करने लगे हैं. di by I di by dt is directly proportional to I. Now di by dt is equal to ki, proportionality constant k. Rearrange the equation, di by I is equal to k dt. So now that k dt we get it, so instead of c what we are getting, d. Okay, so integrating the equation, log of I kt plus b. So on integrating, b is the constant of integration, but we already know minus log of it is equal to b. Okay, so we put up that value, substitute the value of b from Beer's law 1, we get the log of I minus kt. सिंपली है कि वहाँ पे c था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, kt आ गया minus log of it. So we take the log of it over here, log of I is over here, and that is a kt. Now we again that keep it that log of we are arranging by this formula, log of a minus log of b is equal to log of a upon b. So जैसे log of a क्या हो गया, log of a means log of it divided by log of I. So we get it that equation, log of it upon I is equal to kt. Since we taking the it upon I is equal to kt, so now we convert into the log base or natural log. So it upon I is equal to kt. Okay, so in the case of this I upon it, we can make the inverse on the both sides. Inverse करने के बाद I upon it is equal to e raised to minus kt. So now we replace this it over here, and what we get, I upon it is equal to ekt. That is the Lambert's equation. So we get it the Beer's equation upon Lambert's. यहाँ पे kt और वहाँ पे kc. So I is equal to I2 दोनों में भी क्या हो गया, सेम हो गया. ठीक है. So now we want to Beer's and Lambert both equation. So we are having equation 2 or equation 3. Okay, so in the case of this one, this is equation 3. In the case of this one, equation 2. So हमने क्या किया, equation 2 और equation 3 को combine कर लिया, तो I upon I is equal to it. अब अगर हमने यहाँ पे देख लिया ना, तो माइनस के सी टी हो गया. के सी इक्वेशन बियर्स की लॉ की होगी और लैम्बर्ट्स लॉ में के टी आ गया, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 कंबाइन कर लिया. उसकी वजह से क्या हो गया, आई अपन आई टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस के सी टी. अब हमने क्या किया, आई अपन आई टी कन्वर्ट टू द नेचुरल लॉग बेस 10. हमने क्या किया, नेचुरल लॉग बेस में इसको कन्वर्ट कर लिया. सो के इज इक्वल टू के इंटू 0.4343. सो now
we get it this value, we rearranging the terms. So हमने क्या किया, सिर्फ IT को वापस इस जगह पे ले लिया डिवाइडेशन में. So I upon IT is equal to 10 raised to KCT. Now we invert both sides. हमें सिर्फ नेगेटिव साइन इसमें का रिमूव करना है, इन्वर्ट करना है हमें इसको. तो IT अपॉन I रीअरेंज हो गए और 10 और यहाँ पे माइनस साइन निकल गया, KCT हो गया. ओके, नाउ वी टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स. जैसे हम लॉग लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, log of IT upon I is equal to KCT हो जाएगा. But transmission is equal to I upon IT and observance log of 1 by T. Okay, so जैसे हम ट्रांसमिशन ये हो जाएगा, दैट absorption भी क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रांजिशन. वाई दिस, बिकॉज एब्जॉर्प्शन जब ज़्यादा कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कम हो जाएगा. दैट्स वाई ए इज लॉग ऑफ 1 बाय टी. हेंस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाय आई टी. ओके, एब्जॉर्प्शन इज लॉग ऑफ 1 बाय, तो लॉग ऑफ टी हो गया. सो टी इज नथिंग बट क्या हो गया, whatever the transmission is there is nothing but the I by IT. So we put up that value of T in this equation, we get it the I upon IT. So A is equal to log of I upon IT. We shifted to this upper side. Okay, so उसको ऊपर लेते हैं तो IT ऊपर आता है, I नीचे आता है. That is equation 5. Okay, so now uh, using equation 4 and 5, whatever the log of A is equal to, means since A is equal to log of IT अपॉन I, यहाँ पे I है जो यहाँ पे चला गया है, और IT डिवाइड बाय I is equal to KCT. Okay, so whatever the KCT is there, so we come to know A is equal to, we replace this one, A is equal to KCT. Okay, so instead of K we can use this epsilon E value. A is equal to ECT. That is our final equation. हम क्या बोलेंगे उसको, हम final equation बोलेंगे. Okay, so in the case of this one, what is the A is nothing but the absorption. Then whatever the equation is there, uh, whatever the this E value is molar extinction coefficient, that is liter per moles centimeter. C is nothing but the concentration of drug and T is nothing but the path length. We have to remember this equation. Both equation को हम पूरा explain करेंगे. हमने I by IT is equal to minus KCT लिया, बाद में IIT को 10 से किया, फिर उसका rearrange किया, inverse किया, log दोनों तरफ लिया, और उसके वजह से बाद में क्या किया, but transmission is equal to I by IT and observance is equal to 1 by T. So whatever the transmission is inversely proportional है, तो A is equal to I by 1 upon I by IT. We rearrange that equation. A is equal to log of IT by I, equation 5. Using equation 4 and 5, since A is equal to log of I by IT by I, this value, and log of IT by is equal to KCT by this one also divided by I. So finally we come to know that हम क्या बोलेंगे कि whatever the final value that we are getting is A is equal to KCT or A is equal to ECT, where A is absorbance, this one is the molar extinction coefficient, concentration of drug, and path length, which 1 cm and molar per liter. That one is the whole mathematical explanation of this one. Okay, so now there is a relationship between the transmission and absorption. Transmission means what? Defines the ratio of the rate of intensity of incident light and transmitted light, IT. Transmission usually expressed as percent transmission. Percent transmission is I upon IT. Okay, it's multiplied by 100. Observance is equal to A is equal to log of 1 by T. As we know, put up that log of 1 by I by IT. So log of IT by I. This one is the equation. That is the things in the case of this one. Okay, now we are that is the whole derivations. Remember
द फ्यू ऑफ द इक्वेशंस. KCT याद रखना है, KT, ओके, I upon I is equal to IT plus e raised to KC or e raised to KT. That you have to be remember. Now derivations from Beer's law. In the case of Beer's law, generally, as if you able to see in this diagram, there is a positive deviation, there is a negative deviation. Here is a positive, here is a negative deviation, and here is an ideal. Beer's law it state that if you plot a observance, हमने क्या किया है, ये observance है, x axis पे ये है, ठीक है, y axis पे concentration है हमारे, ओके, observance against the concentration, straight line passing through. यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक straight line, this one is z का कोई लेन देन नहीं, x और y axis का ऊपर है, हमने यहाँ पे रेडिएशन पास कर लिया, straight line passing through, origin is obtained. But usually a deviation from a linear relationship between the concentration and absorption and apparent failure of Beer's law. ओके, कब होता है, अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने रेडिएशन पास कर लिया, ऑब्जर्वेशन कॉन्सेंट्रेशन है, हमें क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन. पॉजिटिव डिविजन कब मिलता है? व्हेन अ स्मॉल चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस. क्या होता है इसमें? एक स्मॉल चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस ग्रेटर चेंजेस इन द ऑब्जर्वेशन. कुछ ज्यादा हमें ऑब्जर्वेशन मिलने लगता है, पॉजिटिव मीन्स ज्यादा ही दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविजन. और कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव डिविजन. हम क्या कर रहे हैं, लार्ज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत बढ़ रहे हैं, बट प्रोड्यूस अ स्मॉलर चेंज इन द ऑब्जर्वेंस, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, उसमें लेसर चेंजेस होने लगते हैं. सो दैट इज द चेंजेस और डेविएशन टेक्स प्लेस इन द बियर्स लॉ. आइडियली हमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव मिलता है, निगेटिव. पॉजिटिव मीन्स व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस द, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, उसका डेविएशन ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन गेट चेंज इन ऑब्जर्वेंस, उसका ऑब्जर्वेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है. और सेकंड केस में कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेंस बहुत कम दिखा रहे हैं. सो दैट इज द डेविएशंस ऑफ बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ. ओके, सो बियर्स लॉ विल होल्ड गुड ओवर वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस. अलग अलग चेंज पे वो गुड होल्ड करता है. प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ कलर आयंस or the color non-electrolytes in dissolved state does not change with concentration. Beer's law is hold good over wide range of concentration, provide the structure of the color ions. ये हमें क्या करता है, कलर आयन का स्ट्रक्चर दिखाई लगता है, the color non-electrolytes in the dissolution state. Okay, so in the case of this one, okay, changes with concentration. If a color solution is having a foreign substance, उसके अंदर कलर सब्सटेंस के अंदर क्या है, इसके अंदर एक फॉरेन सब्सटेंस है हमारे इसके, ठीक है, whose ion do not react chemically. अब if a color solution is having a foreign substance whose ion do not react chemically, वो react नहीं कर रहा है chemically with the color components, its small concentration does not affect the light absorption, may affect light absorption and may also alter the value of extincting coefficient. If a color solution having a foreign substance whose ion does not react chemically with the color component, its small concentration does not affect the light absorption but may affect light absorption and may also alter the value of extent of coefficient, that because of the foreign substance. A reason for deviation from Beer's-Lambert's law. Mainly why this deviation takes place. Might be because of the instrumental deviation, might be because of the physiochemical, certain physiochemical changes in a solution. उस solution के अंदर अगर हमने कुछ physiochemical changes, we first of all study of the physiochemical changes that takes place. Okay, so instrumentation deviation. Factor like instrumentation means what? Where is the radiation source is there? उसका अगर स्ट्रे लाइट में फैक्टर लाइक स्ट्रे लाइट, इम्प्रॉपर स्लिट विथ, उसके अगर विड में कुछ चेंजेस हो गए तो, ओके, देन फ्लक्चुएशन इन अ सिंगल बीम, उसके अंदर अगर कुछ फ्लक्चुएशन होने लगा तो, और व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज नॉट यूज्ड कैन इन्फ्लुएंस द डेविएशन. हमने अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रॉपरली यूज ही नहीं की, मोनो मीन सिंगल, क्रोमैटिक मीन लाइट,
that causes the deviation. Or physicochemical changes in the solution. Factor like association, dissociation, ionization. You can say change in the ionization means ions produced means change in the pH of the solutions. Faulty development of color, एक improper color development होने लगा तब. Incompletions of reaction, Ri at higher concentration can influence. Ri means refractive index. Okay, at higher concentration may influence the deviation. Okay, then the example associate methylene blue at a concentration of 10 raised to 5 meter exists a monomer and has lambda max of 660 nanometers. वो एक्ट करता है मोनोमर और उसका लैम्बडा मैक्स कितना है 660. बट मिथाइलिन ब्लू एट कॉन्सेंट्रेशन अबो 10, मिथाइलिन ब्लू एट कॉन्सेंट्रेशन अबो 10, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया है अबो 10 ले लिया, 10 के ऊपर ले लिया. तो 10, अब यहाँ पे -5m दिख रहा है लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है -4m. एग्जिस्ट डाइमर और ट्राइमर बट हैज अ लैम्बडा मैक्स ऑफ 600 मिथाइल ब्लू एट द कॉन्सेंट्रेशन. अब हमने सिर्फ चेंजेस क्या किया है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन का चेंजेस किया है. जब हम ये कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो मोनोमर बोल के एक्ट कर रहा है और उसका लैम्बडा मैक्स 660 पे आ रहा है. बट मिथाइल ब्लू एट कॉन्सेंट्रेशन अबो 10⁴ मीटर एग्जिस्ट एज अ डाइमर और ट्राइमर, वो एग्जिस्ट एज अ डाइमर और ट्राइमर but has a lambda max of 600. Taking the example of the association, that is the physiochemical example, association. Now we study about dissociation. So in the case of dissociation, potassium dichromate at higher concentration exists as a orange solution. Okay, chromic acid clearing solution रहता है उसमें potassium dichromate लेते हैं तो higher concentration exists as a orange solution having lambda max of 450 nanometers. बट ऑन डाइल्यूटिंग, अब उसका डाइल्यूट करने के बाद कलर चेंज होने लगता है. डाइक्रोमेट आयंस आर डिसोसिएटेड इनटू द क्रोमेट आयन एंड विच इज येलो इन कलर एंड लैम्बडा मैक्स इज 410 नैनोमीटर्स. सो वाटर के अंदर हम जैसे ऐड करने लगते हैं Cr2O72, सो H2O, तो हमें 2H आयंस प्लस क्रोमेट आयंस हमें साइड में मिलने लगते हैं विच इज येलो कलर. सो वी गॉट इट द नैनोमीटर्स ऑफ 410 एंड येलो इन कलर. ओके, देन इफ कलर सोल्यूट आयोनाइज, हमने कलर सोल्यूट लिया है उसको हमने आयोनाइज कर लिया. सो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, बेंजाइल अल्कोहल इन क्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट इन पॉलीमेट्रिक इक्विलिब्रियम. कलर हमने क्या किया है, कलर सोल्यूट आयोनाइज कर लिया हम उसमें के. डिसोसिएट इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल. ओके, बेंजाइल अल्कोहल हमने सॉल्यूशन लिया इन क्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट इन पॉलीमेट्रिक इक्विलिब्रियम. ओके, C6H5CH2OH, this benzene, and this one is in methanol. So C6H5CH2OH taken 4 times. So dissociation of polymer increase with dilutions. Dissociation क्या होता है, polymer increase होने लगता है. कब increase होने लगता है, with dilutions. The monomer absorb 2.750 to 2.65 microns, whereas the polymer absorb at 3.3 micron. Hence the absorption at 2.7 microns shows negative deviations. Okay, whereas 3 micron gives the positive deviation. ज़्यादा ही दिखाने लगता है या कम दिखाई लगता है. Okay, so deviation may also occurs due to the presence of impurity that fluorescence or absorb at the absorption value when the interference introduce an error in the measurement of absorption or radiation. Okay, so penetrating the samples. Deviation may also occurs due to the presence of impurity that in fluorescence or absorb at absorption value the interference introduce an error in the measurement of absorption. वो changes करने लगता है absorption के जो lambda max है और radiation penetrating the samples. If monochrome light is not used, deviation may occurs. आप पॉलीक्रोमेटिक बहुत ज़्यादा अलग अलग डेविएशन की लाइट अगर यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका डेविएशन दिखाने लगेगा पॉजिटिव और निगेटिव. ओके, इफ विड ऑफ अ स्लिट इज नॉट प्रॉपर, एक प्रॉपर विड की हमें अगर प्रॉपर नहीं ले लिया therefore allows the undesirable radiation, तो क्या हो जाएगा, that all parts in the instrumentation विड रहेगा मोनोक्रोमेटर that we studied in detail in the instrumentation. Now just remember these words,
without slit is not proper, therefore the allow undesirable radiation to fall onto detector. This undesirable radiation might be absorbed by the impurities present in sample and thereby change in absorbance. उसकी वजह से उसकी absorbance change होने लगती है. Okay, so if the isolated species undergo एक isolated isolation species है undergoes the polymerization, example benzyl alcohol and carbon tetrachloride. Okay, in higher concentration exit in polymetric form, dissociation of the polymer increase with the dilution with causes absorbance. पहले बोला है कि concentration बढ़ेगा तो absorbance बढ़ेगा. Okay, so another case of suspension of the Beer's law can't be applied but can be estimated colorimetrically with different known concentration reference curve. These are the whole, you can take the few example for the physiochemical changes. There are lots of the example that are explained. Now the instrumental deviation of Beer's and Lambert's law. Instrumental means possibility of error due to the practical impossibility of obtaining a monochromatic radiation may be minimized by selection of species region, whereas the change in the absorptibility with a change in the valence is very small. Okay, dictate that the valence selection from a broad radiation than a sharp rising or sharply falling selection of the absorption curve. Hence, it is necessary to practice to prepare a calibrated curve for the absorbance or absorbs concentration relation at the wavelength. General instrumental factors are the various like the breathe and all things we have discussed that one that may affects our deviation might be given in the positive or might be given in the negative. So whole things all about the this deviation. So these all things are covered in this chapter. Hope you get it the things. Take the few example of deviation. Remember that Beers and Lambert's law is very important. I by IT is equal to that e raised to whatever the Kc and Kt. Kc for Beer's law, Kt for Lambert's law. So remember that equation. We just combines with that equation. Okay, A is equal to ACT. So we get it the final equation, and all things are remember that one. So thank you very much for your patience learning, and wish you a happy learning. Thank you very much.